Very good evening, guys. How are you doing? Good evening, sir. Evening, evening. We just started. Some questions. How will you check verify working of priming pump हो गया था? हाँ. What is under critical running? इसका आंसर मिला आपको केवल? तो सर आप जैसे बोल रहे हैं कि जो क्रिटिकल आरपीएम है उससे नीचे अगर रन करेंगे तो अंडर क्रिटिकल है, ऐसा है क्या सर? नहीं. I will cover that. Basically, जो आप बोल रहे हैं वो नीचे रन कर रहे हैं वो ओवर क्रिटिकल. See, I will cover that. What is beta filter? कोई रेफरेंस है? कोई रेफरेंस नहीं सर, ऐसे ही डाला बस। यही एग्जैक्टली यही डाला हुआ बीटा फिल्टर क्या है? बीटा रेशियो रहता है ना फिल्टर में, बीटा नंबर रहता है जो बीटा फिल्टर। क्या रहता है अंशुल, क्या बता रहे हैं? बीटा रेशियो तो पता है सर, बीटा फिल्टर अब हो सकता है क्वेश्चन गलत डाला हो, ये भी हो सकता है। बीटा रेशियो क्या है? बीटा रेशियो बेसिकली आपका वो रेशियो होता है जो आपका जो भी उसका साइज है फिल्टर का। और किसका होता है? मतलब बेसिकली आपका जो माइक्रोन्स का उसका ना? हाँ, तो जो भी माइक्रोन्स में फिल्टर का साइज होता है उस साइज से करस्पॉन्डिंग एक बीटा नंबर रेशियो होता है कि मतलब हाउ मच ऑफ योर दिस साइज ऑफ पार्टिकल्स इज इट अलाउइंग और ब्लॉकिंग आउट। वैसे वो तो ठीक है, बट बीटा फिल्टर हेपा फिल्टर तो पता है मुझे, मतलब वो एयर। ये बीटा फिल्टर मैंने भी सुना नहीं है और मैंने ढूंढा इधर उधर बट कुछ मिला नहीं सर इसके ऊपर। मोस्ट लाइकली शायद क्वेश्चन गलत लिखा हुआ। बीटा फिल्टर, अल्फा बीटा फिल्टर, मे बी कोई फिल्टर इन द इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर कुछ होगा, मे बी समथिंग दैट वे. You know, there are filters in your this thing, no? क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में भी फिल्टर होता है बेसिकली. बट ये मोटर्स में पूछा सर। नहीं, वो तो मोटर में पूछा होगा, बट वही बीटा. आप वो फिल्टर्स की बात कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कैपेसिटर वाले फिल्टर्स होते हैं? वैसा फिल्टर होगा बेसिकली. बट फिर वो मोटर में नहीं पूछता सर, अगर कैपेसिटर फिल्टर की बात कर रहा हो तो। कैपेसिटर एक फिल्टर जो आपके जो सर्किट्स के अंदर होता है, मे बी समथिंग, आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेसिंग कि मे बी वैसा कुछ होगा. बीटा फिल्टर रेशियो तो ठीक है, वो तो मिल जाएगा, बट बीटा फिल्टर में भी somebody is written wrong movie. मैं क्वाइट पॉसिबल सर। It was मैं भी सोच रहा था क्या है. Then वाटर बॉक्स क्या है? Any idea? ये भी एज इट इज मैंने कोट किया है क्वेश्चन, मतलब कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया है इसमें। Concept of water box. I haven't tried. I have to ask somebody. एक नेट पे मुझे कुछ मिला था बट वो कितना रिलेटेड है आई डोंट नो। कि फर्नेस में आपका एक जो फर्नेस का बाउंड्री होता है उसमें यू ऑलवेज कीप द वाटर टू अवॉइड ओवरहीटिंग, मतलब यू कीप इट इन कांटेक्ट विद द वाटर। इससे रिलेटेड है क्या, मतलब बॉयलर से रिलेटेड है क्या, वो आई एम नॉट वेरी श्योर। क्वेश्चन आगे पीछे क्या था उसके? कुछ नहीं था सर, यही है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर बॉक्स। किसने पूछा था ये? वार्ड सर है, ये सारे क्वेश्चंस वार्ड सर के हैं सर। मतलब रिसेंट तो मैं रिसेंट है. ये शायद नवंबर में पूछा। एक व्हाइट बॉक्स है, नवंबर में पूछा. टॉर्शन बॉक्स है, कोई जगह ना वही देखना. व्हाट्सएप पे पूछना पड़ेगा. किससे? व्हाट वाज द क्वेश्चन यू हैड आस्क्ड? अंडर क्रिटिकल रनिंग तो ठीक है, दैट इज ओके, नॉट दैट बट नॉट अ बिगर प्रॉब्लम. ओके. Then one more question you had asked me was vulcanizing. देखो, vulcanizing is basically joining of any rubber parts, right? राइट। तो दूसरा हमारे पास on some ships, no, you have large O-rings that need to be made like this. Okay. There is again specialty O-ring kit which is there. Yeah, I'm not talking of the one which is just got the jointing material जो होता है ना,
what do you call, स्प्लाइसिंग किट जो होता है. हाँ, वो वैसा वाला उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. तो एक स्पेशल एक किट होता है, तो स्प्लाइसिंग का किट भी होता है, उसी के अंदर वल्कनाइजिंग का भी किट होता है. ठीक है. Okay. That can be the answer to this. I just share something on this thing. One second. मतलब वो स्प्लाइसिंग के किट के साथ में ही you can have a vulcanizing kit also. मतलब along with the what do you call, just the splicing with the, you know, the what is that, वो जो आपका जो jointing compound है, ठीक है, एक वो बात भी है. And then you can have rubber o-ring which is a bonding machine. ठीक है, vulcanization bonding machine. मतलब वही बात वही है कि it is just used for the same purpose, कि to bond your two rubber or rubber silicone parts basically. So that is the idea. But है ना, ऐसा कोई specific part मेरे दिमाग का नहीं आ रहा है which is using this machine. Better है one. हाँ जी. है ना, उसका स्टंट ट्यूब का सील को जोड़ने के लिए. नहीं वो क्वेश्चन ऐसा है कि स्टंट ट्यूब के अलावा और कहाँ यूज करोगे? वो तो है ही हमारा. The question is कि अलावा apart from there, see you can say about the vulcanizing kit for the O-rings. ठीक है, वो तो मैं देखा हुआ है कि हल्का सा छोटा सा एक सिमिलर किट है, जैसा बड़ा वाला आपका जो फॉर द सीड रिंग्स है, वैसा आपका वल्कनाइजिंग किट होता है फॉर द O-ring also. ठीक है, तो एक स्प्लाइसिंग किट होता है जस्ट अ नॉर्मली फॉर द थिंग. ठीक है. I'm just sharing something on the group. If I won't share on the group, I will share the video one second. Link है. One second. Please confirm ये वही है. Sorry, ये वही है. One second, I'm just showing you. I was seeing on my phone. One second. Sharing the link, आप बाद में वीडियो देख लेना. I've seen this long back. I remember. I just shared the link. Hot splicing for vulcanizing gaskets and rubber O-rings. Yeah. So obviously the jointing material is also of the same type. It is having that property which can be vulcanized. Means you are not all O-rings can be done in this manner. The specialty one can be done. Then Anshul, आपने मेरे को एक दो क्वेश्चन पूछे थे. Are you sure the question is disadvantage of high top line type of piston? Disadvantage? ये सर यही पूछा, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक मिनट. Disadvantage of high top line pistons. डिसएडवांटेज ही पूछा सर, मैंने भी देखा है. This is really stupid because it is being given. See, I was just trying to find one comparative image of top land with high top land. Okay. Advantages अपने को पता है कि it is away from the keeping the piston ring away from the main combustion space से away कर देता है. So one I can think of is that you have to give additional what do you call thickness to the ground. One second, I'm just opening the. ये देखो, ये लेफ्ट साइड पे वो प्रीवियस स्टैंडर्ड है and ये राइट साइड पे क्या है. तो फर्स्ट एक्चुअली आई वाज थिंकिंग मे बी इट इज रिड्यूसिंग द combustion volume, but you see what they have done here, that they have shown one crown ending or one what do you call uh, your cylinder head ending up here and one which is ending up down here. So top land is to show करने के लिए है, but one more image you see. Yeah, this image you see. So now on the right side they're showing the high top land, and on the left side they're showing the regular one. Okay. Obviously this is done got an OS piston also, but you see what I was thinking because of this image in mind is that it is having the more what do you call volume. But I think this could be also because of the OS design which is there along with this top land.
ये height of plant plus overs दिखाया. So that is one thing I could think of. Maybe clearance value is increased, but then actually, if you think about it, that the other one, you see this design, both of them are the conventional pistons, not the overs design. And so what they have shown is that they've shown a longer, what do you call, your cylinder head, or higher cylinder head. Okay, here the cylinder head is smaller on this side. So if you think about it that way, maybe one disadvantage could be that you have to make a bigger casting for the, what do you call, cylinder head. तो अगर आपको high top end piston लेना है, तो maybe your cylinder head would have to be also exchanged. I mean, you can't just simply exchange the piston with this thing. You might have to change the or the cost, the entire cylinder head design also. ठीक है? तो evidently यहाँ पे तो दिख रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है? That is one thing. Second thing, what I can think of is that now, because this area is susceptible to higher temperatures. Okay, so in comparison with the previous design, maybe I'm thinking that you might have to make this much more the top coating to be, much more thicker. यहाँ पे remember there used to be inconel coating on the top. Up to 3 to 4 millimeter of inconel was there in the conventional design. जब वो ओरस आया, ओरस में वो conventional में वो इंटरनल निकाल दिया उसको, ठीक है. बट ये अगर ये conventional डिजाइन है, तो हाई टॉप लाइन की वजह से नहीं वो लोग इनको डाल सकते, तो जनरली आल्सो देयर. थिंकिंग आउट लाउड के व्हाट कुड बी अदर थिंग. इनकोनल ओरस में भी है ना? नहीं है. ओरस में एक इनिशियल ओरस में था, देन फाइनल जो ओरस डिजाइन आया है जो अभी आजकल चल रहा है उसके अंदर नहीं. इनिशियल ओरस में जैसे ही ओरस लॉन्च किया था, they launched it with internal coating, but a thinner internal coating. I think it was 6 millimeter का 3 millimeter कर दिया था, half the millimeter distance. And then finally जो अभी conventional आजकल चल रहा है, उसके अंदर internal है ही नहीं ओरस के अंदर. Let me think about one more thing. Maybe your piston cooling oil outlet temperatures could be higher. Maybe I'm thinking that way because more volume is there for the piston cooling oil. So maybe some more amount of oil is going to be taken in. So maybe you will have to take more amount of your entire oil for the sump. अगर आप सोचो कि even if suppose you see on this side the volume for the cooling space is less, on this side the volume for the cooling space will be more. So you will have to supply maybe higher amount of oil. So maybe oil pressure for the for the high top end one will have to be higher. That means the lube oil pressure, so that more amount of lubrication is there. But आजकल तो लोग ने वो भी कर दिया ना. They have made that jet shaker method also is there. So that also takes care of lot of surface areas that way. So we don't have just a plain cross section like this as you see. But see, one more thing I was thinking of, that maybe you have to add this piston cleaning ring. But I was trying to find out whether PC ring was there before the top line, high top line. और मेरे को इसका reference मिला नहीं. I could not get an image with a normal engine with a piston cleaning ring. So maybe I think they had introduced it together, ना? When जब ये लोग ने introduce किया था along with the high top line, they had introduced this piston cleaning ring to prevent this thing. So maybe additional cost of piston cleaning ring is also there, and additional cost of machining this what do you call piston cleaning ring groove into the liner also. Yeah. But again, on the same point, this is a photo from your CC pounder. Now this photograph, you cannot see a piston cleaning ring over here. ये वाले में भी high top line यहाँ पे PC ring दिख नहीं रहा है. Maybe it is not shown here. I was thinking maybe PC ring could also be one thing that is added to that, but I could not get a confirmation. When I was seeing the way it was added, it was launched together, okay, but ऐसा नहीं है किधर लिखा है कि
along with this, you have to give the PC ring. Okay. It was launched together, but I could not confirm whether you have a separate PC ring and in the older design. Means जो आपका जो normal conventional engine है, इसके अंदर में manual देखना पड़ेगा मुझे. Different manuals whether you have the PC ring in a older piston और जो आपका जो conventional piston है. सर ये कब आया था हाई टॉपलैंड वाला? एनी आइडिया आपको? पीसी काउंटर देखना पड़ेगा, उसके चैप्टर में दिया हुआ है मैन बीएमडब्ल्यू के प्रोग्रेशन में ना, इन द उसमें दिया. होल्ड ऑन, जस्ट वेट. So just got the physical copy of PC founder. So piston assembly, page number 288, talks about the high top land. Okay, there is a photograph of this MC versus MCC engine. तो जब MCC डाला था ना, तो वो लोग ने हाई टॉप लाइन डाल दिया था. ठीक है, they had introduced this MCC engine, तो उसके अंदर हाई टॉप लाइन डाला था. But I can't see in this photograph, it is not having the what do you call this thing, what do you call piston cleaning ring. So this photograph basically इसी को refine किया हुआ है. ये वाला जो photograph है ना, ये इसको much more clearer images है. So there is not a piston cleaning ring in this. And I show you this photograph. This is much more interesting photograph than this because ये जो है ना थोड़ा सा इसमें कुछ प्रॉब्लम है. I just open this photograph in the CC corner itself. जब मैं physical copy देख रहा हूँ ना, I get the image of it. So if you have the book in front of you, it's on page 287, 287, 88. इसमें ये दिया हुआ है. This time I'm opening the digital copy. You can also see. Give me a second. And then in the combustion chamber, again in the program expansion, they're talking about the high top land, piston crown with high top land.
In order to protect the piston rings from the external load from combustion, the height of the piston top end was increased. The resulting increased buffer volume between the piston ground and the cylinder wall improves conditions for the rings and allows longer time between overhauls. The high top end was first introduced in the mid 1990s and positive service experience leading to its use for all new engine types. Okay. One second, the photograph is open up. I just show you this. There's a very huge book, 957 pages. This year I got the physical copy out. Okay. Just one. Thing is, I have the latest version in the digital copy. इसमें तो 287 तक तो आया ही नहीं है यहाँ पे टर्बो चार्जिंग में तो चेक करता हूँ 14 में है तो hold on. So see, this is the image of cylinder. So you see piston ring pack assembly MC versus MCC. Here you see there is no PC ring. The same image, but you see what is the difference over here? That they are showing clearly that the same pistons at the same connecting rod connections. Here they are showing that this piston crown lies lesser. So basically, as I was thinking, yes, the clearance volume is increased. Okay. So if clearance volume is increased, see there is one idea also, no? Because you want to give little bit more volume for the gas. Maybe this is also one thing that when clearance volume is increased, you are having some power losses also because of that. Yeah, could be one idea behind that because you see this image shows there's a SMC Mark 5 and a S50, 60, 70, 80 and LMC and Mark 6 with high top line. So both of them are shown MC MCC engine. Right? तो यहाँ पे लोग ने मेंशन किया है क्या टॉप लाइन के बारे में piston oil, piston oil cooled piston cooling the first time, piston cooling man, nothing about that. Then up ahead, when you here also, this is just showing a conventional piston. Okay, input is there for the thing और बात किया हुआ है. Then you have here when you talk about going ahead, talking about the program expansion. Here you have the high top line. Okay. New and previous decided on MC engine with combustion chamber. So this is showing the conventional engine, and this is showing the high top line with no, this is not the high top line. Sorry, this is the MC only conventional engine. We had another way this one. This is the high top line piston cleaning ring. Piston cleaning ring. अच्छा पुराने बुक के अंदर ना इन लोगों ने ये इमेज दिया ये इमेज दिया हुआ था ये इमेज ठीक है this is not the height of it. This is just a OS shape with piston change of the piston design. Here they talk about the height of okay height of line. They are giving this in this. So where it was saying here, so heat load on the liner, lowering the melting surface between liner and as much as possible above the uppermost rate of this means that greater part of the heat load is absorbed by cylinder cover, which is made of steel. So you see, as I was saying, yes. So as the piston crown is lowered, your cylinder cover will have to be made much more stronger. So ये इसका हो गया. That the greater part of the heat load is absorbed by cylinder cover, which is made of steel and thus more resistant to high heat loads. So that means cost and design of the cylinder cover is going to be more additional, more expensive. In addition, the cylinder cover is water cooled, making it relatively easy to control the temperature. ठीक है.
So they're saying a higher heat load on the because liner का heat load कम हो गया, it is coming onto the basically cylinder cover. The cylinder cover has to be made much more stronger. That is the idea. Mr. School Boy, जो औरत की mountain ये ठीक है. Then ये देखो ये ओरस का ये नया ओरस में there is no internal. As you see, internal earlier was there. This is a new internal without an internal. Back and then PC ring. PC ring incorporated top of liner seeing a date नहीं दिया है. PC ring in the top end design. No idea when this actual PC ring was introduced. तो ठीक है. Basically piston crown with height of line का एक ही ये है that you have to have when increasing rating the major development change in the speed combustion chamber performance control is the heat load on them. With a short stroke larger engine have rather flat combustion chamber because of relatively small compression volume. This makes it more difficult to distribute the injected fuel oil without getting close to the combustion chamber. Higher rating means. Sir, हाँ जी बोले. ये piston cleaning ring came in around 2000. कैसे पता? ये सर्विस लेटर है 382. Is that the first introduction? हाँ, इंट्रोड्यूस्ड किया है ऐसा लिखा है उसके अंदर. द पीसी रिंग पेटेंट पेंडिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन अ न्यू हाई रेटेड केएस 1890 एमसी एमसीसी इंजन्स. One second. What is the service letter name? 382. One second. One second. 382. Just 382. 2000 का SL00 382. SL00382. 002 382. 003. अच्छा, you must have got this from the net, just from Google it, right? Google किया होगा आपने. ये है मेरे पास में सर सर्विस लेटर मैन के बहुत पुराने पुराने भी है. लेकिन जैसे आप बोल रहे थे उसके उसके नहीं है मेरे पास में वात्सिला और सल्जर के. Online, if you see, online man interviews given the service letters since 2009. उसके पहले की भी वो लोग ने शेयर नहीं की है. उसके पहले की मेरे पास है सर. एक्चुअली एक व्हेन आई वाज इन सिनर्जी उनका जो ये है आपका पीएमएस वाला जो सॉफ्टवेयर है, तो उसमें उठा दिया. हाँ उसमें सारी कंपनीज के हैं मतलब. तो शेयर मैंने just share the service letter. ओके जस्ट अ मिनट. Just go through it. Because 1990s में ये आया है तो उसके बाद आया तो it's not along with that. ठीक है, that is okay. One thing is definite that the piston cylinder head has to be much more basically uh, much more stronger. ठीक है. 1990s में introduce किया ये. Have you sent it to me? सेंडिंग सर जस्ट अ मिनट. क्वेश्चन अजीब है. डिसएडवांटेज तो नहीं बोल सकते बट एडिट ये है कि भेजा सर ग्रुप पे भेजा. यस. ये आपने जो पाउंडर्स में दिखाया था सर हाई टॉप लैंड वाला, ये कब कब आया था, कब इंट्रोड्यूस हुआ था सर?
1990 as per them. 1990 तो फिर सर व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इसका एक डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि उस पे डिपॉजिट्स ज्यादा होने की वजह से लाइनर पॉलिशिंग होता है. But then you cannot say that nowadays it is there, no? नहीं, nowadays it is not there, so in order to counter that they introduced piston cleaning rings. Could say ऐसा this, बोल सकते हो. could say this, मतलब we could say this because temperature भी higher है तो soot deposition भी higher रहेगा, ठीक है? And as it is there, you have to have the special higher resilient material का आपको temperature rated material का आपको ये देना पड़ेगा, क्या बोलते हैं your uh, your this thing, yeah, cylinder head. Okay, the cylinder head will have to be of a higher temperature because the heat which was taken up by the liner is now will taken up by the what do you call cylinder head, because that is like. So, एक ओरस डिजाइन बता रहे थे तब आप बोले थे कि जो टॉप हाईलैंड में था इसमें एक प्रॉब्लम आता था कि कभी कभी एग्जॉस्ट वेल टकरा जाता था, वो भी कुछ इशू. but OS design के वजह से, not because of top design, top control. वो OS design के वजह से, वो OS design की वजह से था जिसके अंदर वो लोग को एडिशनल सेफ्टी वॉल देना पड़ता था in your design of your this thing, no, inside your exhaust valve के इसके अंदर, because this design you had a new design now, no, you have a flatter OS design. एक जो old OS था वो थोड़ा ज्यादा ये था, if you remember, it was much more protruding out. So nowadays they have changed that to the little bit more flatter OS design. इसी के अंदर मैं from your this one, you know, क्या बोलते हैं, फाउंडर के अंदर ही उसकी फोटोग्राफ साथ में रहता है. One second, I have it in my separate model. जब करूँगा मुझे that was because of OS design, not because of that was OS with height of line. But Okay, not sir. only they are talking about conventional. अगर you can argue. I'm not talking about OS. I'm talking about conventional piston. ठीक है? वो OS के अंदर को definitely दिखा. ये वाला MEC OSP डिजाइन जो एक बोला था ना, ये वाला where it is slightly flatter. ये टॉप हाइट अपलाइन दोनों में डेफिनेटली, दोनों में पीसी रिंग है, दोनों में हाइट अपलाइन है. ये वाला कन्वेंशनल ओरस है और ये वाला हाइट अपलाइन MEC वाला OSP रिलीफ बोर्ड डिजाइन. ठीक है, बेसिकली द OSP डिजाइन इज बेसिकली हैविंग द फ्लैटर ओरस वैली. बेसिकली जो ऊपर का जो ये है मैक्सिमम हाइट थोड़ा रिड्यूस कर दिया. ठीक है, सो दैट मींस व्हाट इज सेइंग अंशुल, क्या बोले आप? So that is the reason the safety valve was omitted in that. So yeah, you could say, but that is in both conventional piston और इसके बीच में तो नहीं होगा, वो ओरस डिजाइन की वजह से. तो अगर आप ओरस और कन्वेंशनल डिजाइन को देखोगे तो देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस. आजकल होता है ना. हाँ जी, see, OS and conventional were nearly same. The maximum what do you call height slightly higher होगा OS than conventional. क्या बोल रहे हैं आजकल क्या होता है? आजकल ओरस डिजाइन यूज होता है ना. OS डिजाइन ही है ये नया वाला P डिजाइन जो है, OS P डिजाइन ये बनाया हुआ है. ठीक है, that is the idea. इसका राइटअप भी था किधर मेरे पास, one second. OS P डिजाइन नहीं, जनरल कंबशन चेंबर OS डिजाइन के बारे में बात कर रहा हूँ. स्पीड डिजाइन के बारे में. हाँ, ये ये भी इसमें से फाउंडर वर्जन. With the view of omitting the safety valve, the exhaust was actuated. The ORS-P version of ORS design was chosen for operated K engines. The reason the ORS piston leaves less room for fitting the exhaust valve spindle, okay, than with the traditional P design. To prevent the contact between piston and spindle, therefore, a mechanical stop is built into the exhaust valve air spring and thus limiting the maximum spindle lift. मतलब वो spindle का वो डिजाइन ही चेंज कर दिया इसके अंदर एग्जॉस्ट वाल्व के अंदर. तो अभी वो कभी एग्जॉस्ट वाल्व जाएगा नहीं, इतना ओपन होएगा ही नहीं. It will go and touch the top of this thing. And that's why with the mechanical lifter,
excessive different pressure relief using bore holes is no longer possible, so there is a safety valve built into the exhaust actuator. Using OSP version designed with a slightly lower piston dome creates enough space to allow slightly larger exhaust for spindle length. Thus, it makes possible to exploit the well-proven OSP relief valve design of the exhaust valve oil cylinder, and safety on actuator is no longer necessary. 90 the other setup solution represents cost saving for engine license and simplification of operators. Yet the performance is identical to original OS design. The performance वही है, but it is better in the operational is what they say. Now, इसके बारे में मैं कुछ और थोड़ा सोचने दो, but what I can name 2 points is that your PCO oil pressure will have to be larger because larger volumes are there inside your cooling chamber of the piston side. Then increase heat load on the ground, or not on the ground, on the what they call on the cylinder head. So cylinder head have to become made longer, and cylinder head has to be becoming much more can take much more heat. Okay. Then also the uppermost piston ring, okay, it has to be made of a much more uh, resilient this thing. One second. क्या दिखा है? The heat load of the cylinder liner has been reduced by lowering the mating surface between liner and cylinder cover as much as possible, just above the uppermost piston ring at top dead center. This means that the greater part of the heat load is absorbed by the cylinder cover, which is made of steel and thus much more resistant to high heat load. यही एक चीज है जो इसका एक एडिशनल ये हो गया, मतलब आपको जो उसका जो कॉस्ट है of the making of your cylinder cover will have to be made of steel, okay, instead of some alloy or lower alloy. Because earlier the heat was taken by the liner. Now the mating surface is more lower, so the more amount of heat will be taken by your this thing. Okay. So see again, also the piston is cooled by a system oil, which means lower cooling efficiency compared with cooling of cylinder cover. Okay. Oil cooling the piston, however, offers a number of greater advantages. Optimum way of reducing a temperature level on piston is to reduce the heat load. This has been secured by redesigning the shape of combustion engine piston to provide more space around the fuel valve. ये तो ORS की बात कर रहे हैं. The ORS से better heat load आ गया into this thing. What I can understand is this one thing is that only that this thing. You can't say that combustion chamber volumes are reduced or something like that. तो उसका मेरे पास कोई उसका support नहीं है. So this one can be definitely said that your the high heat temperatures because your mating surface of your cylinder head is lower, so more temperature. ये तो एक definite बोल सकते हैं. Apart from this, let me just think about it. I asked a couple of guys also. Kal, what do you think is the idea behind it? Okay, next critical and under critical learning. Give me a second. Founder maybe is starting math and okay, page number 45 or 46. हाँ, फाउंडर में ही है. I just open it. Page number just hold on. कौन सा क्वेश्चन है सर? वो under critical learning up. Okay. So it is there inside your first chapter of this thing. So see, basic idea क्या है? You see, under critical, over critical. When you think about the wordings, ठीक है? आपको लगता है कि under critical means you are running below your critical RPM, and over critical means you are running over critical RPM. But actually, it is ulta. Under critical means your critical range of your running is around
35 to 45% over the engine speed. That means you are running the engine always in the under critical range. अच्छा, ओके 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 ऐसा ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ठीक है। तो उसका डिजाइन ही ऐसा है कि आपका जो एमसीआर है इट विल रीच बिफोर Natural यू रीच द frequency, क्रिटिकल। ये देखो, the natural frequency of one node vibration is adjusted to resonance with the main critical order occurs 35 to 45% above the engine speed at specified MCR. The characteristics of undercritical running are normally the following: relatively soft shafting system, probably no turning wheel, tuning wheel with relatively low inertia, और आपका जो flywheel की बात कर रहा है, large diameter shafting enabling the use of shafting material with a moderate ultimate UTS, but requiring careful shaft alignment due to relatively high bending stiffness and without bar speed range. Because now you don't have any bar speed range because you are always running it. The bar speed range is above your normal operation. बेसिकली आपका एमसीआर ही बार स्पीड रेंज के नीचे है, सो यू नेवर हैव टू पास थ्रू द बार स्पीड रेंज, राइट सर? Operate at 100%, but this thing. But ऐसा engine कभी होता नहीं. We always having the overcritical running only. ठीक है? राइट। Because problem क्या है कि you have to have a sharp shafting and no flywheel की जरूरत है and no inertia flywheel की जरूरत है. ठीक है? When running under critical significant varying torque MCR conditions, about 100 to 150 of the mean torque is expected. This torque propeller torsion amplitude introduces a significant varying propeller thrust, which under adverse conditions might excite annoying longitudinal vibrations on engine, double bottom or deck house. Shipyards could be aware of this and that to ensure that the completely aft body structure of the ship, including DB space, is designed to cope with the desired phenomena. Means you have to basically make it much more stronger. अगर आपको ये अगर vibration आ सकता है in this area. Now overcritical running is your normal running which we are always having. The natural frequency of one node vibration is to be adjusted so that resonance with the main critical order occurs 30 to 70% below the engine specified range. That means you will pass through the critical RPM at around 20 to 38%, okay, and get out of it, okay, and then you will never stay in that. Such overcritical conditions can be realized by choosing an elastic shaft system leading to a relatively low natural frequency, and characteristics of an overcritical are as follows. Tuning wheel may be necessary on crankshaft forward end, is always there. Tuning wheel and turning wheel may be relatively high inertia. ठीक है, ये एक्चुअली टर्निंग व्हील है, ट्यूनिंग व्हील नहीं है, ये ट्यूनिंग ही है बेसिकली, टर्निंग नहीं है. ठीक है, शाफ्ट विद रिलेटिवली स्मॉल डायमीटर्स रिक्वायरिंग शाफ्ट मटेरियल with a relatively high UTS with much more resilient shaft चाहिए. Bar speed range about plus or minus 10 with respect to critical engine speed range. ठीक है, torsional vibrations and overcritical may in special cases have to be eliminated by use of torsional vibration damper, जो हमेशा होता है. This can be fitted with necessary at extra cost. For a six-cylinder engine, a normal procedure is to adopt a shaft line with a diameter according to the class rules and consequently a bar speed range. Exciting insertion with the engines of 7 or more cylinders are smaller and bar speed range are normally not necessary. Because the critical इसका ये बहुत कम हो जाता है. The bar speed range जो है ना practically becomes very less. Yeah. That is right. So you can just take a screenshot of this part of this part. सर इसमें ना एक क्वेश्चन कोई बोल रहा था कि कभी पहले पूछा था कि जब एक यूनिट कट कर देते हैं तो क्रिटिकल रेंज सेम रहता है. क्या एक यूनिट कट ऑफ कर दिया मतलब यू आर रनिंग विद योर पावर इम्बैलेंस. यस सर. ओनली कट ऑफ मींस फ्यूल कट ऑफ किया. यस सर, फ्यूल कट ऑफ करके तो उसका क्रिटिकल रेंज सेम रहता है या चेंज रहता है? सेम रहेगा. ठीक है, ओनली इफ फ्यूल कट ऑफ. ठीक है, बिकॉज नाउ दैट थिंग इज स्टिल डायनेमिक लोड तो फिर भी है ना, वो इट इज स्टिल बीइंग मूव. ठीक है, ओनली इफ यू हैव रिमूव्ड इट कंप्लीटली, मतलब आपने उसको मैकेनिकल अनबैलेंस भी कर दिया, पावर अनबैलेंस भी कर दिया, तब जाके चेंज होगा. तो शाफ्ट के ऊपर है ही नहीं आपका. ठीक है, तो देन सी क्रिटिकल स्पीड रेंज, bar speed range depend on the one क्या बोलते हैं आपने, जो one note vibration जो है आपका, that is depending upon your layout of system with CPP है, ये है, उसके बाद पर vary करता है.
एक्चुअल वाइब्रेशन पे वेरी करता है, ओरिजिनल पे वेरी करता है। तो टोटल आपके जो द एक्चुअल एंड द जैसे गाइड फोर्स मूवमेंट्स होते हैं उस पे जनरेट करते हैं, उस पे आ रहा है। तो अगर पावर रिलेटेड अनबैलेंस है ना, तो बेसिकली देयर इज अ formula of power related unbalance to external power by engine power, external moment. So basically, if I'm just trying to इसी में था किधर थोड़ा इसी चैप्टर में किधर मैं पढ़ा था। Second order movements. ये evaluate if there's a risk that first order second order movements. Okay, where exciter and frequency power related unbalance can be used as a क्या बोल रहा है power what does this mean? External movement of engine power, is this related to that? See, I think so. As long as you're just cutting off the unit, it is becoming a load. Okay. If it becomes a load, then total आपका power कम हो जाएगा. Total power कम हो जाएगा तो RPM slow हो जाएगा. The same fuel, the same about it. You will have to give basically more fuel that to operate at the same RPM. Vibration effect over any. I'm just trying to think about it. What do you guys think? हाँ, you and Anshu, what do you think? इससे फर्क होगा? Because I am thinking. तो थोड़ा रीड करना पड़ेगा सर मेरे को, ये टॉपिक बचा हुआ मेरा। Thinking, see, as long as I think so, it is still there connected to the shaft, no? It will be still, it is not adding to the speed, but the only thing missing is आपका जो क्या बोलते हैं कंबशन की वजह से जो लोड आ रहा है वो दैट इज द ओनली थिंग मिसिंग। अदरवाइज जो रोटेशनल फोर्सेस हैं, जो गाइड मूवमेंट्स हैं, वो सब तो सेम ही रहेंगे। और उनकी जो नीचे जो पावर का स्ट्रोक के अंदर जो जो आ रहा है, पावर स्ट्रोक वाला ही कम होगा बस। बट वो पावर स्ट्रोक वाला जो है वो नहीं सर, मेरे को थोड़ा अच्छे से रीड करना पड़ेगा, इस टॉपिक में ढंग से पढ़ा नहीं है अब तक। So see, what I can understand is basically that I remember one thing. It has definitely said that if you remove it from the sink, तब आपका वो change हो जाएगा, because your movements are different and everything is different. If we just think about it, because देखो ये इतना तो कंफर्म है कि अगर आपने निकाल दिया पूरा यूनिट, मैकेनिकल अनबैलेंस भी है, पावर अनबैलेंस भी है, then obviously your critical RPM level will change. Okay. But if you are just cutting off the unit, I think it should not change, but I will confirm it. मेरे को देखना पड़ेगा. This कि ऊपर वो नेक्स्ट पूछेगा तो फिर नया क्रिटिकल आरपीएम मिलेगा कैसे? क्या बोल रहे सॉरी? अगर उसको बोलेंगे ना कि ये करने से चेंज होगा तो फिर नेक्स्ट डे पूछेगा नया क्रिटिकल आरपीएम पता कैसे चलेगा? और कैसे पता लगेगा? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा सर। There will be a formula for this. There was a formula in your last this thing handouts I had seen कि critical RPM का actual formula कैसे calculate करते हैं. मतलब वाइब्रेशन का जो पहली बात तो दे plot out the entire this thing कि where are the nodes, anti nodes and everything, and then they have the entire amplitude of vibration mapped out, and then they design whether the engine is overcritical or undercritical. ठीक है, उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि where is going to be the absorbing thing, like your anti-vibrational mountings or your dampers. ठीक है, एक्चुअल वाइब्रेशन, टॉर्जनल वाइब्रेशन dampers कितने होंगे, कहाँ पे होंगे, उसके बाद से they decide that okay now this is going to be the where your resonance is occurring.
Okay. So you can actually found out. It cannot be just not like something that आप बोल दिया कि किधर होगा. And I think so. एक one thing I'm thinking about this. Yeah, I remember one table was there somewhere. I'd seen. Okay, 1 unit cut off, your bar speed range changes to this. कुछ याद आ रहा है तो table was. Let me just. Long back I had seen this. I was studying about balancing and everything ना. तो वहाँ पे एक कुछ था कि engine speed to your number of units and imbalance of the thing is there. तो उसमें change था. तो देखना पड़ेगा. You just write this down to me and then I will just check it out tomorrow. तो उसके बारे में मेरे को I have to just brush on my this vibration level topic. तो उसको मैंने देखा नहीं है काफी टाइम से. सर ये आपके जो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी इम्बैलेंसेस जो होते हैं, हाँ. यही कॉन्सेप्ट है ना, इसी की वजह से वाइब्रेशन इंड्यूस होते हैं, राइट सर? वो प्लस आपके कितने सारे आपके मासेस हैं उसके वजह. हाँ, ठीक है. If your number तो आपका मास तो चेंज नहीं हो रहा है अगर आपने यूनिट कट आउट किया तो. now they are acting like a load, na? They are absorbing some of the what you call rotational force energy. Okay. तो लोड तो उतना ही है बट मीन्स इफ यू थिंक अबाउट द रोटेटिंग मासेस वो तो उतना ही है बट नाउ दे आर एब्जॉर्बिंग सम ऑफ द एनर्जी. ठीक है. तो उसके वजह से कुछ चेंज था. नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एंटायर थिंग विल चेंज आई थिंक. I have to confirm it. Wait. Let me just think about it in a थोड़ा उसको मेरे को पढ़ना पड़ेगा. I have to just think this. यस वैसे ही है. एक एक रिलेशनशिप था मेरे को याद आ रहा है. As long as it is connected, it is there. I had seen one more thing here. One more I had seen. 1 unit cut off था कि 1 unit remove था. You have to just let me just find it out tomorrow. I देखना बस. रेजोनेंस चेंज तो होना चाहिए because सर ये जो आपकी बार्ड स्पीड होती है, इट हैज ओनली गॉट टू डू विद द टॉर्शनल वाइब्रेशन, राइट सर? no because रेजोनेंस भी मैटर कर रहा है ना. तो योर जो आपका जो इंजन का जो वाइब्रेशन है नॉर्मल वाइब्रेशन वन नोट वाइब्रेशन जिसको बोलते हैं वो भी चेंज. हाँ. ठीक है. एंड इफ दैट इज मॉडिफाइड then your part speed range will also modify. See, the torsional vibration and this thing they overlap each other or you can say they are in resonance with each other and that is what is leading to your part speed range. But अगर आपका engine का भी जो natural frequency of vibration है वो change करता है that will also lead to your changes. मतलब it is not only the torsional vibration which is or the secondary induced vibration which is getting to your part speed range. मतलब इंजन का इफेक्टिव वाइब्रेशन जो जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो भी चेंज हो जाएगा तो उसके वजह से भी देयर माइट बी एनी चेंजेस. मतलब मेन इंजन का क्या एक्साइटेशन है या प्रोपेलर इंड्यूस एक्साइटेशन है वो देखना पड़ेगा ना आपको. ऐसा मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ ना. नहीं नहीं सर, मेरे को थोड़ा रीड करना पड़ेगा. I'll better read it and then discuss. नहीं तो मेरे को, मैं भी कुछ गलत बोलूंगा, मेरे को समझ में भी नहीं आएगा. I'll read it more and then I'll ask. कल देखते कल परसों देखते हैं इसका. ठीक है. एंड व्हाट एल्स वाज देयर. एक और कोई क्वेश्चन था. हाँ आपने मेरे को अंशुल आपने मेरे को पूछा था वीआईटी एंड सुपर वीआईटी कुछ ऐसे कुछ पूछा था ना. क्या पूछा सुपर वीआईटी के वीआईटी के. व्हाई वीआईटी इज यू जस्ट सम क्वेश्चन लाइक दिस डेविड टू यस्टरडे. हाँ सर, मतलब इसका ना एक बहुत कंफ्यूजन सा है. मतलब बेसिकली आई नो कि सुपर वीआईटी में उसका फ्यूल इंडेक्स का लोड परसेंटेज का कुछ वो नहीं है, कंस्ट्रेंट नहीं है, बट हर जगह अलग अलग दिया हुआ है. तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है. आपके पास कुछ है क्या? इसका एक मेरे पास चाहिए. आई थिंक ग्रुप पे डाला हुआ है मैंने फॉर लॉन्ग बैक. अगर आप वीआईटी देखो ना फाइल्स में आपको मिलेंगे 3-4 उसमें मिलेंगे और एक ही है जिसमें से अच्छा था. 1 सेकंड मेरे आई थिंक ग्रुप में है. आई थिंक आई प्लेड लॉन्ग बैक.
फाइल सेक्शन में अगर आप जाओगे ना, where to go to files if I can understand the same difference. Yes. This one, the difference between VIT and super VIT करके नाम है उसका. This is the one which is there. I think यही वाला Marine Inbox करके वेबसाइट था, इसमें निकाला. So what is your confusion exactly? सर कुछ लोग बोलता है कि सुपर वीआईटी में लाइक व्हेन इट इज इलेक्ट्रॉनिक तो सुपर वीआईटी है, और एक बंदा मेरे को बोल रहा था, आई वाज हैविंग डिस्कशन, तो बोलता है कि वो एक्चुअली वो तो पूरा ही गलत बोल रहा था, बट फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया. वो बोल रहा था कि वीआईटी में जो नॉर्मल रहता है वो वीआईटी है, और जिसमें 2 रैक होता है वो सुपर वीआईटी है. मैं बोला यार ऐसा तो नहीं है, तो इसीलिए मैं आपसे. नहीं. अरे सी, नॉर्मल वीआईटी में भी 2 रैक ही होंगे ना, ठीक है. एक रैक तो आपका फ्यूल रैक होगा, दूसरा वाला आपका वीआईटी रैक है, जिससे आपका क्या बोलते हैं बैरल मूव करता है अप एंड डाउन, ठीक है. तो वीआईटी और सुपर वीआईटी में क्या कुछ बोल रहे? मैं उसको बोला कि ऐसा नहीं है, तो वो मेरे को बोलता है नहीं नहीं तुम्हारा गलत है. और ठीक है यार, मेरा गलत रहेगा. डोंट आर्ग्यू विद पीपल लाइक दिस, ठीक है. यू गेट कंफ्यूज योरसेल्फ. अगर आपको लग रहा है ना कि आदमी ये थोड़ा सा आपको कई लोग ना दे जस्ट ट्राई टू मिसलीड पीपल, सो यू नेवर नो यू कुड बी दैट टाइप ऑफ पर्सन, ठीक है. तो सुपर वीआईटी का मतलब क्या है? एडजस्टेबल ब्रेक पॉइंट्स, ठीक है, एंड एडजस्टेबल टाइमिंग्स. एंड मतलब योर ब्रेक पॉइंट्स कैन एडजस्टेबल. लेट मी जस्ट शेयर दिस स्क्रीन ऑन दिस वन. So there are many of these different things. ये एक अच्छा फाइल था और एक और अच्छा फाइल था. दो फाइल अच्छे थे इसमें. सर ये वाइब्रेशन के लिए कोई अच्छा सोर्स है क्या पढ़ने के लिए सर? I have that uh, एक है अपना मैन इंटरव्यू का, एक वाइब्रेशन का एक है. या तो आप, अगर आपका टाइम है अभी, एक्चुअली आई वुड नॉट रेकमेंड नाउ बिकॉज नाउ योर एग्जाम इज राइट ऑन योर हेड, ठीक है. ये जो आपका सीसी फाउंडर का चैप्टर नंबर 1 है ना, हाँ वो दिखा है सर, बट कुछ कॉन्सेप्ट उससे कुछ खास क्लियर नहीं बन रहे. बहुत ज्यादा मिशमैश किया हुआ है. दे हैव नॉट बीन एबल टू डू इट नाइसली, ठीक है. तो एक सर ये मैन बीएनडब्ल्यू वाला ही आई थिंक मैंने ये जब पढ़ा रहे थे, क्या नाम है, नहीं सामंत सर पढ़ा रहे थे. अच्छा, उन्होंने भी शायद इसमें से ही पढ़ाया था, बट ये मेरे को कहीं पे ऑनलाइन मिला नहीं है वाला जो वाइब्रेशन रिलेटेड मटेरियल है. अरे क्या है वो यार, वो आई आई टेल यू वन सेकंड, दिस आई टेल यू. अच्छा पहले ये वीआईटी सुपर वीआईटी देखते थे, देन आई विल जस्ट हाँ ठीक है सर, ठीक है. सर इसमें सर वीआईटी सुपर वीआईटी में ना एक बार अगर आप बता पाए तो एफक्यूएस भी बता दिएगा कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे. क्या बोल रहे हैं सभी? एफक्यूएस को इम्प्लीमेंट कैसे कर. वेरी 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 इजी, आई विल शो यू. वीआईटी में देखो, आप देखो ग्रुप में देखो ना, 2-3 फाइल हैं. 2-3 फाइल हैं. लेट मी जस्ट टेल यू टू द करेक्ट वन. एफक्यूएस क्या है पहली बात? सर फ्यूल क्वालिटी सेटिंग, मतलब हर फ्यूल का जो आपका, तो इसलिए उसको मतलब उसी हिसाब से सेटिंग करना पड़ता है कि उसकी बर्निंग प्रॉपर हो. यस, मतलब जो इग्निशन लैग है और आपका जो यू नो द यू वांट द मोर अमाउंट ऑफ टाइम फॉर द फ्यूल टू वेपराइज, सॉरी एटमाइज प्रॉपर्ली एंड पेनिट्रेट इनसाइड द दिस थिंग, तो आप वो करोगे. ये देखो, ये वाला. तो डिफरेंस, देयर इज वन थिंग डिफरेंस विद वीआईटी सुपर वीआईटी
और ये एक और फाइल है, व्हाट इज द नेम, व्हाट इज वीआईटी, कन्वेंशनल वीआईटी एंड सुपर वीआईटी। ये तीन दोनों फाइल्स अच्छे हैं। इसके अंदर आपको देखो एक वीआईटी और सर्वर वीआईटी का इंफॉर्मेशन दे रहा है, देन कन्वेंशनल वीआईटी इज देयर जो एमसी इंजन का है, और फिर सुपर वीआईटी इज देयर, ठीक है, ऑफ मैन वीआईटी, ठीक है। तो अगेन दिस वन अदर फाइल इज देयर, इसके अंदर ये बता रहा है, तो इट सेज सुपर वीआईटी इज इक्वल टू एडजस्टेबल टाइम एडजस्टेबल ग्रेड पॉइंट। देन ये आपका दिखा रहा है ये ब्रेक पॉइंट और ये सब बता रहा है वीआईटी का। तो ये जो पॉइंट्स है ना, इसको एडजस्ट कर सकते हो इन योर सुपर वीआईटी, दैट इज ओनली डिफरेंस, ठीक है। एंड achieved by super VIT. VIT is obtained by special profile on the fuel pump pistons. Therefore, there is a fixed relationship between timing of the fuel injection and fuel index. Okay. Therefore, you must edit the fuel injection timing without changing the fuel index. So this is possible with the new super VIT. For this reason, super VIT is possible to introduce a fuel flow and injection time, which is independent of each other. Okay. So earlier, see, super VIT में basically there is a double what do you call this thing, क्या बोलते हैं, profile on the this thing, all right. So basically ये देखो ये दिया हुआ है both mechanical and electronic versions are there, ठीक है। In the electronic versions and the P and air controller supply the pressure related to servo engine control cylinders instead of pilot were actuated in the fuel frame, and the mechanical version the IP converter release the pilot signal। पर वही बात है, या तो क्या बोलते हैं IP converter है, या आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल में उसका ये है, क्या बोलते हैं control is active, ठीक है। Advantage of electronic version is the break point is calculated from the real conditions, and engine load is calculated from the engine speed and the speed of the fuel, while the compression pressure is actuated by the pressurized purge air based on the basically आपका जो एयर है उसके हिसाब से, वो प्रेशर के हिसाब से वो आपका ये देता है, क्या बोलते हैं, रेशियोज, ठीक है। तो डायरेक्ट लाइव रेशियो दे रहा है। मैकेनिकल वाले में आपको ये नहीं दिया, ठीक है। This one is there and these both the files are good, ठीक है। इसमें सुपर वीआईटी के बारे में भी बताया हुआ, ठीक है। So here it says due to better fuel economy, good combustion, tuning at different roads, and advantage of emission control, the man dealer is named it super VIT. It has got nothing to be advanced version. It is nothing but advanced version of conventional VIT. Super VIT mainly comprises of a double-threaded fuel pump. As I said, double उसके ऊपर ये दिया होता है. I have a photograph somewhere of it. I'll just show it to you. VIT regulator, piston, servo piston controller is there. Shaft FQS is lever is there. It doesn't need a profile or extra oblique cut on the plunger. मतलब basically double threaded fuel pump है, okay? तो extra oblique cut की जरूरत नहीं on the fuel pump. जो आपका जो पहले एक extra profile था, आपका जो on the extra oblique cut on the plunger, वो था on your plunger, वो अभी जरूरत नहीं, ठीक है। Simply a vertical position of pump barrel is lowered and raised for altering the injection timing using rack and pinion mechanism with double threaded fuel pump, the double thread of the pump, मतलब एक double thread दिया हुआ। The double threaded pump upper thread regulates the suction port and thus starting of the fuel injection, lower thread regulates the spill port, thus the ending of the fuel injection, ठीक है। This is what super VIT as per your manual is there. Then conventional VIT क्या था? Adjustable injection plus fixed rate point. Only adjustable fuel injection timing is there. It is used in older designs of man DMV like L35, L42 MC. It is now obsolete for larger engines. जो अभी आजकल सब देख रहे हो उसको सुपर वीआईटी बोलते हैं, ठीक है। सुपर वीआईटी बोल रहे हैं जो आजकल हम लोग के इंजन है। इसके अंदर एफक्यूएस अरेंजमेंट नहीं था, okay. It works on a control air pressure greater than 0.5. The plunger of the fuel pump is profiled and has an extra oblique cut. Due to this extra oblique cut, starting of the injection and ending of the combustion is not free for adjusting during the running period of the engine. मतलब वो fixed है as per the movement of your what you call plunger, वो हमेशा fixed रहेगा। यहाँ पे क्या किया इसमें सुपर वीआईटी में, ये लोग ने पूरा बैरल को ऊपर नीचे मूव कर दिया, ठीक है, और आपके पोर्ट को भी ऊपर नीचे मूव कर दिया, ठीक है। डबल थ्रेडेड है। तो बेसिकली ये आपका सुपर वीआईटी है, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये डबल थ्रेडेड, ये इसके अंदर एक्चुअली एक, हाँ देखो ये डबल थ्रेडेड, एक इसके अंदर थ्रेड है, एक इसके अंदर थ्रेड, डबल थ्रेडेड है आपका बैरल के अंदर। तो एक अगर ये ऊपर नीचे होगा तो आपका बैरल भी मूव होगा, और पहले अगर ये मूव होगा तो आपका प्लंजर भी मूव होगा,
ठीक है. So that is your super VIT. ठीक है. And your conventional VIT में extra oblique cut दिया हुआ था, means there was a double cut. अगर आप कौन सा बुक था वो, just थोड़ा सा. Okay, अगर आपके पास this is a textbook, one second, hold it. एक और बहुत पुराना MCME करके एक फाइल है, ये वाला सुपर VIT एडजस्टमेंट एंड मेंटेनेंस है, तो इसमें आपको दिख जाए. हाँ देखो, ये सुपर VIT वाला है. तो दिस इज द डबल थ्रेडेड सेक्शन व्हिच यू आर टॉकिंग अबाउट. डबल थ्रेड मतलब एक इस पे थ्रेड है, एक इस पे भी थ्रेड है. ठीक है, डबल थ्रेड उसके ऊपर चढ़ा हुआ. एंड अभी आप पूछ रहे थे FQS कैसे करना है ना इसके अंदर. अंशुल, आपने वही पूछा था ना मेरे को. यस सर, यस सर. आइडिया क्या है इसके अंदर. FQS का एडजस्टमेंट यहाँ पे था. एडजस्टमेंट ऑफ द ब्रेक पॉइंट, एडजस्टमेंट ऑफ FQS यहाँ पे किया था. I think it is this change fuel quality. If the fuel is bunkered having essentially different combustion characteristics, Pmax might change. Okay. In such cases, in order to maintain the low SFOC or to avoid running the engine with too high top combustion pressures, the injection timing could be changed. This is one by using the ports G and अच्छा. Okay. अभी क्या बोल रहा है ना, इसमें FQS वाला जब आजकल तो ये सिस्टम नहीं है. ठीक है, आजकल ये ऑटोमेटिक सिस्टम है. अभी ये क्या बोल रहा है, देखो FQS सेटिंग करना है. यहाँ पे था GNH, ये जी कहाँ गया, जी ये बीच वाला बटन है. Point FQS, H is this, I think G is this one second. G, using the board G and I turning the adjustment screw such that the rotation of the sensor T, let the beam H in a desired direction. This operation can be done by changing engine running and a higher Tmax. तो बेसिकली देखिए, ये आपका ये जो पार्ट है ना, ये जो एडजस्टमेंट सेल है, ये आपका VIT का, ठीक है, सुपर VIT का. सॉरी, यहाँ पे आई थिंक दिस इज G वाले को लोअर ये यूज करोगे तो H को आप आगे मूव कर सकते हो. तो दिस एंटायर प्लेट, ये जो इसका जो प्लेट है, दिस विल मूव और इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. सो व्हेन दिस मूव्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पैरेलल टू इट, ठीक है, तो 7-8 बता रहा है, ये वही है. 7-8 ब्रेक पॉइंट लोड, तो स्टार्ट पॉइंट एंड ब्रेक पॉइंट इज कांस्टेंट, तो वही चीज है. तो बेसिकली ये इसको आप अंदर स्क्रू कर दोगे आगे, तो ये आपका जो सेंसर है, ठीक है, तो इसका जो न्यूमेटिक सेंसर है यहाँ पे, वो अंदर मूव कर देगा ये बार के साथ. ठीक है, दैट इज व्हाट इज द ओनली थिंग दैट FQS adjustment in man gateway is done this way. ठीक है, यहाँ पे the fuel is bunkered having this thing, so thereby causing the fuel pumps to be advanced, that is higher Pmax or retarded. ये वाला है. This is the ये वाला है higher Pmax और lower Pmax. ठीक है, this is your FQS setting. तो अगर आपको इसको अंदर कर दोगे, ठीक है, तो ये obviously it will go inside and you'll get a higher pressure out here. With higher pressure, so you'll get a higher Pmax. अगर आपको रिटार्ड करना है, ठीक है, in that case you will pull it out and then you'll get a lower Pmax. ये आपको इसके सब पोजीशंस पता है, ये वाले के. व्हाट इज दिस एंटायर थिंग? हैज समबडी टॉक टू यू गाइस अबाउट दिस? नहीं सर, अभी तो नहीं. ठीक है, मेरे को इसका ना, मैंने भी इसके नोट्स बनाए हुए थे रिटन. लेट मी जस्ट ओपन दैट अप. सर फिर बेसिकली डिफरेंस क्या है VIT और FQS में? फिर
VIT is controlling just the starting stopping. ये देखो, ये आपका VIT का देखो, ये देखो सपोज forget this 3 and 4, ठीक है, तो यहाँ पे आपके VIT कट इन होता है, ठीक है, you start increasing your start sorry increasing your VIT rack, तो यहाँ से प्रेशर आपका चेंज हो जाता है, यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर पे आ गए, ओके, इसके बाद आपके VIT को आप रिटार्ड करते हो, तो VIT रैक को रिटार्ड करते रहते हो इन इफेक्ट, एंड बाय डूइंग सो यू आर एक्चुअली कीपिंग द पी मैक्स कांस्टेंट, ठीक है, दैट इज द सेविंग इन द फ्यूल आया था. Now that is just keeping your constant this thing, but now because your FQS fuel quality setting is bad, your fuel is bad initially, so now you want to get a higher Pmax, or if the fuel quality is very good, अच्छा तो होगा नहीं कभी, ठीक है, you can basically go plus or minus about you know I think it was plus or minus 3 इसका ये क्या होता है वैल्यू, ठीक है, you can turn this up to plus or minus 3 percentage of the entire thing of your Pmax can be increased or decreased. तो ये जब आपको Pmax बढ़ाना है, so you see the cut-in point, okay, where your VIT cuts in, that is basically starting in before. Similarly over here, जब आपको Pmax बैठाना है, तो VIT cut-in point becomes later on. All right, and your PID stopping point, where the VIT cutoff point is happening, that is same. So that is governed on your basic of your, you know, the spring and your motion of your this entire क्या बोलते हैं इसका जो बार है, ठीक है, ये ऑपरेट करता है, which actually moves everything. आजकल तो ये मैकेनिकल VIT है ही नहीं, ठीक है, तो ये मैकेनिकल VIT वाला है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक VIT. इलेक्ट्रॉनिक VIT इज वेरी इजी, उसके अंदर आपको सर्वो पिस्टन ये सब है, and we can see that also. Yeah, exactly. There one second. There's in my VIT वाला folder में होगा. Yeah, मेरे को निकालना पड़ेगा guys. Just give me a second. But the idea being that this is your mechanical VIT. ठीक है. Nowadays on your ME engines this is not there. ME engine में तो fuel rack का जो control है वो governor ही नहीं है, तो फिर it is coming from the computer. ठीक है. तो उसके अंदर जो VIT system है that is all उसके अंदर VIT का जरूरत ही नहीं, बिकॉज उसके अंदर आपका फीवा वाल है, फीवा वाल को तो आप कंट्रोल कर सकते हो. ये तभी चाहिए था आपको जब आपको मैकेनिकल कंट्रोल कर रहे हो ओवर योर यू नो योर फ्यूल पंप एंड एवरीथिंग, दिस वे यू गिविंग ऑल दिस, ये सब काम जाम दिया हुआ है, तो ये आपका जो स्प्रिंग विंग दिया हुआ है एंड एवरीथिंग, ठीक है. तो आइडिया क्या करता है, यू गाइस नो हाउ दिस ऑपरेट्स राइट, कि इसका बेसिक ऑपरेशन क्या है, बिफोर गेटिंग मी गोइंग ऑन टॉकिंग अबाउट दिस. FQS का मेरे को मतलब हाउ इट इज वर्किंग मेरे को पता है. You know that, right? That there is a constant air coming and the variable air signal is coming out of it. Okay. As per this, what is this rod? This either goes ahead or behind, and it articulates over these one. There is one fulcrum point. Yeah, sorry about that. There is this one fulcrum point which acts like a fulcrum initially, and then afterwards, when the lever goes ahead, the second fulcrum point of acts on it, and then your VIT signal keeps on becoming constant at that point. As long as this is parallel, it will keep on becoming constant, and then your fuel is actually retired back. Okay, that is the idea. So FQS के लिए आपको सिर्फ ये एंटायर ये जो आपका जो एच का जो ये जो बटन है, ठीक है, ये दो वाले, ठीक है, इनको आपको इसको बेसिकली योर एंटायर ओरिएंटेशन ऑफ द दिस थिंग टू योर प्लेट, उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है. यू हैव टू लूजन दैट एंड नाउ यू मूव द एंटायर प्लेट, ये जो प्लेट है, यू मूव दिस एंटायर थिंग इन टुवर्ड इनवर्ड्स, ठीक है. इफ यू वांट टू इंक्रीज योर पीमैक्स, तो ये पीमैक्स बढ़ जाएगा. अगर आपको उसको रिटार्ड करना है, तो आपको कम करना है पीमैक्स, तो इसको बाहर खींचो, ठीक है, ये पूरे चीज को, ये जो पीछे वाला पार्ट, ठीक है, दिस बैक वाला पार्ट, दिस वन मूव बिहाइंड, ठीक है. व्हेन दिस मूव बिहाइंड, दिस थिंग्स आर कांस्टेंट, ये जो आपके जो ये जो चीज है ये कांस्टेंट है. व्हेन दिस मूव्स अप ahead and behind, it will change the depression of this microswitch. When it happens, that the signal which is coming out of the air will change, and that will basically change the operation of your VIT, whether it is going higher or lower. Yeah. इसका एक बेटर डायग्राम था जिसमें ये देखो, ये बता रहा है, ये लो लोड में ये ऐसा रहता है, ब्रेक पॉइंट पे ये पैरेलल है, एंड हायर लोड पे मींस अबव योर 80-85%, तो उसके बाद ये ऐसे चले जाता है, ठीक है. सो बेसिकली ये जो आपका ओरिएंटेशन है इन योर ब्रेक पॉइंट पे, ये दोनों पैरेलल रहता है, एंड देन एट द हायर लोड इट बेसिकली
against the spring pressure it is going up. तो G वाला कौन सा था यहाँ पे? G, हाँ, G and H, मतलब G को लूज करो दोनों को और H को टाइट या लूज करो. This will basically go up or down. This is basically a long, basically स्टड जैसा होता है. ठीक है, उसको आप टाइट करोगे तो this will move the entire thing inside. And तो ये G को लूज करना है, ये दोनों बोल्ट्स को. ठीक है, और ये H को अंदर बाहर करना है. When it does that, this sensor pickup is basically moving in or out, and that is your VIT adjustment in your mechanical VIT. जो इलेक्ट्रॉनिक VIT है उसके अंदर सीधा आप MOP पे चेंज करते हो. MOP पे आप उसका चेंज कर दोगे तो वो आपका फ्यूल क्वालिटी सेटिंग उसके अंदर हो जाता है. ठीक है, बेसिकली जस्ट हैव द MOP का एक ऑपरेशनल पैनल पे ME इंजन्स के अंदर, उसके अंदर एक होता है जो जस्ट इससे वाला मेरे को आइडिया है, वो FQS वाला मेरे को आइडिया नहीं है. FQS किस पे? अभी तो बताया ना इस पे. ये जो आपने बताया ना कि FQS ये VIT जो लीवर वाला है आगे पीछे, ये ऐसे इम्प्लीमेंट होता है, वो मेरे को पता है. मतलब FQS आपको सिर्फ एडजस्टमेंट करना है ना. अभी तो बताया आपको, G को आपको लूज करना है. ये G लूज हो गया तो एंटायर थिंग कैन बी मूव्ड अहेड और बिहाइंड. ओके आई गेट इट. तो वो जब आगे पीछे होगा, ये देखो ना, देखो ये मैकेनिकल वीआईटी के अंदर ही है. ठीक है, ओनली मैकेनिकल वीआईटी विच वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, तो ये इसको लूज कर दिया G को, दोनों को G को लूज कर दिया. सो नाउ दिस H को अगर आप अंदर करोगे, टाइट करोगे, तो दिस थिंग एंटायर पार्ट, दिस बैक पार्ट, ये जो इसका ये जो सेंसर का जो बॉडी का पार्ट है, दिस इज गोइंग टू गो अप. व्हेन इट इज गोइंग टू गो अप, इट इज गोइंग टू टच दिस रॉड, ये जो आपका जो कंट्रोल रॉड है A, इट इज गोइंग टू टच इट अर्लियर और लेटर. So that is what is being done, no? If you are screwing it inside, you are tightening it, and that time your travel of the sensor is basically getting reduced. And if you are screwing it outside, then this sensor gets more space to travel. अगर इसको पैरेलल कर रहे हो ना आप, ठीक है? That is the idea. इसलिए FQS में हम VIT लेट और या तो डिले कर रहे हैं या अर्ली शुरू कर रहे हैं. Yeah. इंजेक्शन पॉइंट जो है ना, उससे ये देखो, तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे आपका जो ये है, तो ये जो आपका जो ये है, क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ योर रिटार्डेशन ऑफ ऑफ दिस थिंग दैट हैपेंस, सॉरी, एडवांसिंग ऑफ योर फ्यूल हैपेंस बिफोर. So that means your injection point is also happening before. That is the idea. And यहाँ पे later on हो रहा है. तो इससे आप basically आप total P max को control कर रहे हैं ना, because now the idea is you want to give more time for your this thing to for your atomization to happen, for your penetration to happen. That is the idea. If the fuel is not that great. Got it, sir. Thank you, sir. Yeah. So this is this thing. So you can get advancing for higher PMX or retarding for lower PMX. ठीक है, ताकि आप maximum efficiency of this करें. ठीक है, that is the idea. And ये इसका different adjustments है. If you want to adjust only the break point, तो आपको क्या करना है, 5 and 6 adjustment करना है. ये वाला basically आपको इसको लूज करके इसको आगे पीछे में, ये जो आपका जो सेंट्रल ये जो क्लैंप पोर्ट है, तो करना है. अगर आपको ये ब्रेक पॉइंट को ऊपर नीचे करना है, तो सिर्फ ये वाले स्टड को आपको चेंज करना है. ठीक है, ये वाले स्टड को आप ऊपर नीचे ले जाओ तो इसका जो फल्क्रम पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, द फल्क्रम पॉइंट चेंजेस, द मैक्सिमम 100% पी मैक्स स्टेप बंद होता है, तो या तो वो फ्यूल रैट कम करेगा या ऊपर करेगा. ठीक है, सिमिलरली अगर आपको इसको बढ़ाना है, ठीक है, ब्रेक पॉइंट को आपको चेंज करना है, इन वेयर योर कटिंग पॉइंट आपको चेंज करना है, बट पी मैक्स कांस्टेंट रखना है, तो ये इसको चेंज करो ऊपर वाले. ठीक है, ये फाइल भी है हमारे, अगर आप VIT सर्च करोगे ना, ये फाइल भी हमारे ग्रुप में है. ठीक है, MCE, बट इट इज वेरी ओल्ड फाइल. आई थिंक 1985 का है, 87 का है, वेरी ओल्ड फाइल. ठीक है, तो बेसिक आइडिया आपको इसमें मिल जाएगा. ठीक है, एंड दिस डबल हेलिक्स का ये जो था, आपको दिखाता हूँ फोटोग्राफ. आपने मेरे को केवल आपने भी मेरे को कुछ पूछा था कि व्हाट आई वुड आस्क मी, ऐसा अभी शो इट यू. नहीं, आई वाज आस्किंग कि वो आपके पास अगर वाइब्रेशन का कुछ है तो प्लीज, अगर इफ यू कैन शेयर. There is one file on man BMW, basics of propulsion or something like that.
And then electronic VIT is a totally number other game. Electronic VIT जो आपका mechanical VIT को replace किया था, मतलब before your electronic engines, you had again electronic VIT. So electronic VIT was I have the file on the electronic VIT of your Vatsila. ये देखो ये है. So इसके अंदर you have got many things. You have charge air signal speed, ये whether you want a low NOx mode. Then up on that you have the additions. Basically you are giving the signal from the normal VIT signal. ठीक है? Then you're getting the VIT with respect to speed comparison. ठीक है? उस दोनों को compare करके निकाल के ये क्या आ रहा है? ठीक है? And then it is coming out and you are getting a low NOx mode if it is there. Finally that signal which is there, depending on whichever is larger, either VIT signal or low NOx mode, whichever is higher, you are selecting. If you are selecting low NOx mode, then only low NOx mode will come. हमने कल देखा था ना low NOx mode का एक देखा था कि you changing your profile of injection for low NOx, तो ये low NOx mode है. ये obviously Vatsila का है, ठीक है? And then you have got if you're going into a VIT signal is only coming, then VIT signal is coming, then you can have the VIT off signal. If VIT off on नहीं है तो उसका एक logic diagram. Then you have got the fuel quality setting. Now fuel quality setting का एंगल बताओगे कितना एंगल से पहले आपको इंजेक्शन देना है, या इंजेक्शन टाइमिंग ऑफसेट, दो चीज. What that timing your injection timing is supposed to be offset, and then this thing is there. Then it is adding the signal of the VIT signal to whatever this fuel quality setting का जो value है और injection timing offset का value है, and that उसको लेके आप चेक करते हो whether engine is running in ahead or astern. ठीक है? अगर astern रन कर रहा है तो ये सबको ओवररन कर देगा. astern का एक कांस्टेंट उसका एक रनिंग का सिग्नल है. बट नाउ सपोज अहेड रनिंग कर रहा है तो इट कम्स ओवर हियर. नाउ VIT फेल एंगल, एक एंगल है कि इफ योर VIT इज फेलिंग, इफ इट नॉट देन इट इज गोइंग टू हेवी सी फिल्टर, देन इट इज गोइंग टू योर स्ट्रोक टू एंगल कन्वर्जन. दैट मींस स्ट्रोकिंग जो आपने स्ट्रोक दिया है उसको एक्चुअली कन्वर्ट करता है, एंड देन एक्चुअली द स्ट्रोक इज कमिंग टू द पोजीशनर. ओके, एंड इट इज सीइंग द मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम द फीडबैक and giving the actual value for the thing. So VIT plus FQS is being relayed to your actual to the your common your fuel injectors. ठीक है? To your actual control systems. ठीक है? ये आपका RTA engines के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक VIT था उसका ये है. ठीक है? मैन के इंटरव्यू का इलेक्ट्रॉनिक VIT का मेरे को मिला नहीं है ऐसा फ्लो चार्ट या अंडरस्टैंडिंग. So this was there and one more thing was there in this. आगे दे ये VIT का है. ये आपका मैक्सिमम प्रेशर ऑफसेट. दिस इज द VIT एडजस्टमेंट जो आपका MC में करते थे एडजस्टमेंट. ये आपका ME के अंदर एडजस्टमेंट है, सिलेंडर प्रेशर ऑफसेट, व्हिच इज करस्पॉन्डिंग टू VIT एडजस्टमेंट. मतलब VIT एडजस्टमेंट इज नॉट देयर, बट यू हैव गॉट दिस मैक्सिमम सिलेंडर प्रेशर ऑफसेट. मतलब यू वांट Pmax टू बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड. ठीक है? तो ये आपका ऑफसेट का यू कैन चेंज दैट, एंड दिस इज almost comparable to VIT adjustment. ये आपका VIT और स्पेसिफिक VIT, IMO VIT, और ये वाला है VIT IMO ट्यून. IMO ट्यूनिंग के हिसाब से वो प्रीवियस वाला डिफरेंट था. नहीं एक्चुअली सेम ही है VIT एंड IMO ट्यून. That is the basic idea. So ये भी मतलब, but I hope you have understanding something कि VIT कैसे करते हैं. Basic idea कि electronic VIT बोला तो you can say something, right? मतलब it is basically an electronic system and you got a positioner and actuators. So everything is controlled by actuators. No mechanical spring wing, nothing coming from the fuel rack. It is basically getting the stroke feedback from your actual fuel rack का जो position है कि whether the how what is the signal given from the governor. ठीक है? तो ये RTA engines का था electronic VIT का. एक और स्टूपिड क्वेश्चन पूछा था एक बार किसी ने कि which one is higher, VIT rack or fuel rack? Which one is higher and which is lower? कौन सा रहता? क्या क्वेश्चन है सर? Which rack is higher? Which rack is lower? Is VIT rack higher or the conventional fuel rack higher? Means above. Question में. VIT rack is on the top. I mean,
always about no constant common question है, मतलब maybe some guy must be really not being able to do this, you know. एक सेकंड अभी मैं वो एक वाइब्रेशन का आपने पूछा ना, एक मेरे पास था, just give me a second. We got the answer to Bart speed range and this thing. Seeing over here. You see this? Uh, this is a formula for Bart speed range. ये BSR जो दिखाया हुआ है, ये आपका ओवर क्रिटिकल रनिंग इंजन के अंदर है. So you have the BSR PM, that is the basically the what do you call BSR range, okay, is PL minus PP by PP. PL is PP is the product full propeller curve, as well as PL is the engine power given. Without DLF at the same RPM, the PSR X. So basically, what he's trying to say that the powers also make a difference. Okay. One second. BSR, the bar speed range, shafting efficiency. Uh, See, I tried this one. That's why I was thinking about this. You see, that bar speed range, I have to extend 60%. The bar speed range PL, and in PM is this. Just hold on. That thing is something else. That is something else. Sir. That is a separate, not. बेसिकली डीएलएफ इज अ डायनामिक लिमिटर, जो लिमिटर लगाया हुआ है तो वो बता रहा है कि पीएमएस पावर मार्जिन एटलीस्ट 10% ऑफ द पार्ट स्पीड रेंज होगा. ये पावर है इन द पार्ट स्पीड रेंज, दिस इज सेपरेट थिंग, दिस इज नॉट योर पार्ट स्पीड रेंज कैलकुलेशन. पार्ट स्पीड रेंज इज बेसिकली इन द इनिशियली ओनली व्हेन दे डिजाइन द वेसल, तो वो पार्ट स्पीड रेंज का देखते हैं डिजाइन है. I remember there was one more this thing about vibration. One second. ये तो वो वाला है ना फाइल, your basic principles of man energy solution. There is one file, successful vibration performance completed at sea. Let me just see what this file is. Basic constitutions of everything. नहीं, ये तो वाइब्रेशन परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए बता रहा हूँ. एक था, एक सेकंड.
There was one file I remember long back I'd seen. Was it a yes, recent. Hold on. ये DNB का फाइल है. It's the name of the file. Prevention of harmful vibration in ships. It's like a 1983 का file है. It's quite a nice this thing. It talks about different vibrations or different types of vibration, why the vibration occurs and everything. ये एक फाइल है और फाइल है शिपबोर्ड वाइब्रेशन एंड टेंशन. ये तो ज़्यादा ही in-depth है. Don't that much. ये शिप स्ट्रक्चर कमेटी का फाइल है. One sec. I got lot of books also on vibration, but वो ज़्यादा हो गया है. आपको exactly क्या चाहिए क्यों? What exactly you want about the basic idea of vibration? सर हाँ वही है, वो जो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर वाले जो वाइब्रेशंस हैं एंड उससे रिलेटेड फिर मैं आगे ABS का भी एक गाइडेंस नोट्स ऑन शिप वाइब्रेशन है. That is इसका also सर. the ABS का ओके. guidance notes on ship vibrations. Uh, I'll share this file as well as the DNV file. Just go through this. It talks about vibration in a quite easy manner. ये दो files हैं. I will share this. I don't want to share something which is too large. Structure vibration. AC वाइनर करके एक बंदा है, उसका टेक्स्ट बुक भी है, बट ज्यादा बड़ा नहीं है टेक्स्ट बुक. दिस इज आल्सो क्वाइट गुड. बेसिक थिंग अबाउट वाइब्रेशन. बट अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वाइब्रेशन के बारे में, इट विल बिकम बिट, यू नो. मरीन इनसाइट का भी एक दो पेजेस हैं. आई विल शेयर दिस आल्सो. वेरी बेसिक थिंग, यू नो. हाँ ये है वाइब्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू स्ट्रोक डीजल इंजन. इट्स लाइक अ, आई थिंक मैन बिल्डर का ही है. आई थिंक इट्स लाइक अ वेरी ओल्ड थिंग. यस यस, दिस इज द वाइब्रेशन शार्प वाइब्रेशन. ये मैं ढूंढ रहा था. ये काफी अच्छा है. आई विल शेयर दिस वन. ये मैन बिल्डर का ही है. आई थिंक यही आजकल वो लोग अपने टेक्स्ट बुक्स में भी डालते हैं. टेक्स्ट बुक भी मैनुअल डाले. सम पार्ट ऑफ द मैनुअल दे आर टेकिंग फ्रॉम दिस ओनली. मेरे को देखना था कहाँ पे एग्जैक्टली है. ये बहुत पुराना है. वाइब्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू स्ट्रोक इंजन. Somebody, then vibration on ships.
ये सब मैंने पढ़ रहा था तो मैंने just click on downloading from all these different websites. ये पढ़िए आप, अगर वो दो 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 दोनों जो EBS और इसका जो है ना, तो काफी बड़ा है. इट्स लाइक समथिंग लाइक अ 200 पेज 100 पेज का ये. DNV का भी जो ये है गाइडलाइन अबाउट 80 पेजेस का ये है. अब दिस इज बेसिक के लिए आपको जो मैंने दिया है, यू कैन गेट सम आइडिया अबाउट वाइब्रेशन. ओके ओके सर, थैंक्स थैंक्स सर। शिफ्ट वाइब्रेशन में AC माइनर ये भी दे देता. Like a textbook, like a, I think self-published. I don't know whether it is a. Citation, 3 grade, 4 grade, 5 grade excitation. Takeoff a vibration technology not for money. I don't know what this is. Citation. Somebody make this. Good definitions is there. Damping vibration ये सब. Somebody make this. Critical speed क्या है ये सब क्या है. First order हाँ ये भी अच्छा है. ये भी डालता हूँ. Good. Just go through it and just see whether understand something. श्योर सर, श्योर, थैंक यू। So I don't want to give the एकदम भारी भारी नहीं देना चाहता है right now, you know, because नहीं नहीं, उतना मेरे पास सर टाइम भी नहीं है और शायद मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा। जो easy अंडरस्टैंडिंग वाला है ना वो दे दिया जस्ट बेसिक्स के लिए. ठीक है, तो ये ओके सर, थैंक यू थैंक यू। इसमें आपको टर्मिनोलॉजी एंड वो सब मिल जाएगा. फिर डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी एंड एवरीथिंग. ओके, कल से करना है गाइस. व्हाट एनी पर्टिकुलर टॉपिक और अगेन क्वेश्चन आंसर यू वांट टू डिस्कस. बट आप लोग मेरे को एकदम 8 बजे भेजते हो ना, फिर मेरा थोड़ा सा ओवर हो जाता है. नहीं सर, वो पूरा दिन थोड़ा क्वेश्चंस देखता रहता हूँ, आंसर्स ढूंढता रहता हूँ, उसके बाद जो फाइनली नहीं मिलता है वो मैं फिर आपको फॉरवर्ड करता हूँ। ओके, मैं अंडरस्टैंड दैट. ये बात दोनों आप लोग ना मेरे को नियरली वही टाइम में भेजे हो. मतलब इस टाइम भेजा था. दोनों है को 15-20 मिनट बिफोर. एंड देन आई लाइक स्टार्ट गोइंग इनटू दिस किधर किधर आई ट्राई टू रिमेंबर एंड एवरीथिंग. So done the little bit stuff that way. ठीक है, इट्स ओके, नॉट अ इशू. बट अगर आप जल्दी दोगे तो बेटर रहेगा. तो आई कैन आल्सो टेक सम टाइम टू मूव. और पढ़ाई कैसे चल रही है आप दोनों की? कर रहे हैं सर। तो एवरलास्टिंग आंसर वही है. लास्ट में ना वो नए नए सवाल देख के ना कभी कभी थोड़ा सा हिल जाते हैं, बट लगता है कि ठीक है, हो जाएगा, हो जाना चाहिए. बट Practically speaking, if you are able to answer 50% of the questions, ठीक है, then you should not be worrying about it. ठीक है, your offshoot, if you're taking up any of the sets, ठीक है, any of the sets, yeah, some of the sets I'm seeing are a little bit अतरंगी है. ठीक है, और अगर एक क्वेश्चन नहीं आया तो doesn't mean that you will not clear your exam because of one question. हाँ, बट वो डिपेंड करता है एक क्वेश्चन कहाँ पूछा रहा है. क्या बोल रहे सर? वार्ड सर के क्वेश्चन ना वो थोड़ा सा डरा भी देते हैं, ऐसा मतलब लगता है मेरे को. लाइक मेरे को उन्होंने पूछा था, एक्सप्लेन टू बी द प्रिंसिपल ऑफ क्या बोलते हैं जो आपका जो this year in your turbocharger that the ceilings of that of the exhaust gas, what is that principle called? लैब्रिंथ। हाँ, labyrinth. तो मेरे को बोलते हैं explain me the principle of labyrinth ceiling used in the main engines except your except turbocharger where it is used. So so where exactly you are talking about? I said turbocharger में तो रहता है. He said no, not turbocharger. Where else?
तो बाद में तो मेरे को पता लगा कि देयर इज आल्सो देयर इन द क्या बोलते हैं शाफ्ट सील ऑफ द रूब ऑयल, नो, जो आपका जो मेन दिन का जो एंड में शाफ्ट है, केसिंग से जो प्रोट्रूशन हो रहा है वहां पे, उसमें भी है सॉर्ट ऑफ लैबिरिंथ सील जैसा है, नॉट एग्जैक्टली लैबिरिंथ सील बट अ सॉर्ट ऑफ लैबिरिंथ सील, ठीक है। ये यू आर टॉकिंग अबाउट जस्ट बिफोर द फ्लाईव्हील जो प्रोट्रूशन हो रहा है वहां पे। वहां पे, ठीक है, ओके, but he said नहीं नहीं not anywhere else, tell me right in the cylinder head where is the labyrinth cylinder head or nearby there, where is the labyrinth principle being utilized. So the principle of labyrinth is that you are having the pressures which are keep on continuously reducing from the top to the one side to the other end. So Buddha, yes, but where it is utilized. Uh, if you asking me the principle, maybe you are talking about piston rings, maybe I thought that way. तो उसके अंदर भी वो आप वो प्रेशर उसको कम कर रहे हो, बिकॉज आपका जो ओल्डर टाइप ऑफ वेरिएंट है जिसके अंदर आपका बट क्लियरेंस लगा रहे हो, उसको आप लगा रहे हो, यू पुटिंग देम यू नो ऑफसेट ईच अदर के 90 डिग्रीज आप उसको ऑफसेट देते हो ताकि द एग्जॉस्ट गैस डज नॉट लीक कंटिन्यूअसली थ्रू डाउन। तो होता है कि why you took so much time to answer? It's a simple thing, ठीक है। लाइब्रेरी तुम लोग को बोलता है तो तुम लोग हमेशा लगता है कि तुमको सिर्फ एक ही जगह पे है टर्बो चार्जर, ठीक है। That is also same idea, no? That I am reducing the pressure which is there continuously going from top to bottom. राइट 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 सर, लेकिन वो उनके दिमाग में ये चल रहा है, ये हमको कैसे पता चलेगा सर? And he said somewhere near the engine, ठीक है। Then I said, sir, where exactly? So it becomes a little bit, you know, difficult to handle it. But then obviously एक फंक्शन दे दिया था उसमें भी मैंने। मेरे ऐसा हुआ कि मेरे को वार्ड सर ही 3 बार आए हैं, ठीक है। एक बार मेरे को पकरासी सर आए और बाकी 3 बार मेरे को वार्ड सर आए हैं, ठीक है। तीनों टाइम मेरे पे वो मेहमान थे। That is okay. So you must be saying कि सर